Good morning, children. Today we are going to do multiplication of whole numbers. Okay, this is topic of class 6. First, we have to learn what is whole number. Whole number is which is start from 0, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Last class में पढ़ा था हमने. Okay. Now, properties of multiplication. In whole number, which properties are used to do multiplication? या ऐसे बोलो कि होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते टाइम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज में आती है, ओके, या अप्लाई होती है. फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर मीन्स क्या होता है? एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या आप लोग मल्टीप्लिकेशन करो. क्लोजर मीन्स क्या होगा? व्हेन यू टेक टू होल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई देम. ओके, फॉर एग्जांपल 2 and 3, what you get? 6. 6 is a whole number. It means it follows closure property. It means in under the multiplication procedure, whole numbers follow closure property. Done. Means किन्हीं भी दो whole numbers का multiply करो, what you get? You will get a new whole number. Commutative. Commutative is about sequence. Sequence means there is no changes in answer if multiples numbers sequence are changed. Means 2 multiplied by 3 is 6 and 3 multiplied by 2 is also 6. There is no change. Okay. Done. Then it means it is also follow commutative property rules. Now third one is associative. Associative is when you take more than two whole numbers to multiply. For example, 3 multiplied by 2 multiplied by 4. Okay. Now at once only two whole number can be multiplied. एक बार में दो whole numbers का ही multiply होता है. या तो 3 का 2 से होगा या 3 का 4 से होगा. ऐसा तो नहीं 3 का 2 4 से हो गया. डन. 3 multiplied by 2 6. Later multiply by 4. Answer is 24. In another process, यहाँ पे 3 और 2 का फर्स्ट मल्टीप्लाई किया था. Now here we will do multiply 2 and 4. 8 multiply by 3. 3 8s are 24. Answer is same. There is no changes in answer. It means multiply of whole number follow the rule of associative. Associative means आप किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई के पहले करो तो आंसर भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी बच्चों जहां पे भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आती है दैट मीन्स व्हाट विल बी एडेड, व्हाट विल बी सब्ट्रैक्टेड और व्हाट विल बी मल्टीप्लाई टू आंसर विल बी सेम. यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हैं तो ए होल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट सेम नंबर. 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि वापस 4 ही मिलेगा 1 से. तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एनी होल नंबर इज 1. ओके, किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी. डन. जीरो प्रॉपर्टी. Zero property means a whole number multiplied by 0 you always get 0. 4 multiplied by 0 is 0. 5 multiplied by 0 is 0. Okay, इसके नाम से ही पता चल रहा है. Zero property means a whole number is multiplied by to any number. Answer is 0. Now distributive property, it's very important. Okay, and in 6 प्रॉपर्टी में से जो थोड़ी लिटिल जो हार्ड है वो है ये. इसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिखता हूँ एंड वी विल डिस्कस. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी ए मल्टीप्लाई बाय सी. ओके, नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? टू होल नंबर्स मल्टीप्लाई वी विल गेट ए न्यू होल नंबर. ओके, डन.
ये भी एक होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, मल्टीप्लाई किया होल नंबर आया. इट मीन्स इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, sequence of numbers if changed then there is no changes in answer. दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, सीक्वेंस चेंज किया, आंसर सेम मिलेगा, फॉलो करता है. इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मोर देन टू होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 2 6, 4 6 4 24, 3 2 4 8, 3 8 24. Identity property. What is the identity property of whole number? Is 1, because a whole number is multiplied by 1. We always get that whole number. किसी भी whole number का 1 से multiply करो, क्या मिलेगा? 1. Zero property means multiply to 0. Whole number multiply to 0 is always 0. Distributive property is this. अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखते हैं. Okay, distributive property. Now question is fifth of 2B. First we will do fifth question of part 2B, okay, which is on distributive property. Okay, question क्या है? Use distributive property to find each product. Product means multiplication. Okay, first A is 9 into 15, B is 82 multiplied by 103. एंड एक क्वेश्चन लेते हैं हम डी 3807 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, नाउ लुक हियर, वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 9 remains same. We can write 15 as 10 plus 5. Okay, now this question is converted in this property, and property is A multiplied by B plus C is A multiplied by B, A multiplied by C. Okay, यहाँ लिखते हैं A multiplied by B plus C is equal to A multiplied by B and plus A multiplied by C. A is 9, B is 10, 9, C 5. 9 tens are 90, 9 fives are 45. Added answer is 135. Now part B. 82 multiplied by 103. 82 is same and 103 is 100 plus 3. Now A, B and C. A multiplied by B plus A multiplied by C. 82 multiplied by 100. 8200 and 246. Now addition 8446. It is the multiplication of 82 multiplied by 103. Okay. Now this one 3807 remains same. 8 can be written as 10 minus 2. 10 minus 2 8, तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं. Now 3807 multiply by 10. Here we are going to use second identity. प्लस होगा तो यहाँ प्लस बनेगा, माइनस होगा तो यहाँ माइनस बनेगा. सिंपल.
minus 3807 multiplied by 2. 3807 multiplied by 10. Simply we have to put 0. This one 2 7s are 14 and 7614. Now 0 multiplied by 4, 0 minus 4. So then 10 minus 4 6, 6 minus 1 5, 8 minus 6 2. Sorry, 10 minus 4 6, 6 minus 1 5, 0. 10 minus 6 4, 7 minus 7 0 and 30. 30,456. Okay. Now question number 1 is fill in the blanks with a whole number to make each of the following true statement. True statement. Question number 1 is about fill in the blanks. We have to fill and true the statement. जो statement दिया है उसको true करना है. Fill in the blank. Fill in the blank with a whole number with a whole number to make each of the following a true statement. A true statement. Okay, this is question number 1. Part A is 898396 multiplied by 1. Okay. B 64937 multiplied by 0. C 45 multiplied by 7, 7 multiplied by fill in the blanks. Part D 7 into 4 multiplied by 3 and is equal to 7 multiplied by fill in the blanks and 3. Part E we will do, okay, part E 194 multiplied by 23 is written as 194 multiplied by 20 plus fill in the blanks. And okay, I will do A, B, C, D and E part and you have to do remaining part. Question number 1 is all about properties of multiplication. If you know about properties of multiplication, then you can do all this question. A whole number multiplied by 2, its identity. Then what we get? The same number. 1 क्या होती है? What is 1? 1 is multiplicative identity of any whole number. 0 is multiplied by any number is 0. 0 is what? It's 0 identity या 0 property. See, 45 multiplied by 7 can be written as 7 into 45. It means it follows commutative property. Sequence is changed. पहले 45 का 7 से हो रहा था, अब 7 का 45 से हो रहा है यहाँ पे. D 7 multiplied by 4 multiplied by 3. In first part grouping हुई है 7 and 4 की. In second part grouping हुई है 4 and 3 की. It means it is associative property. Part E 194 multiplied by 23. 23 can be written as 20 plus 3. Okay, and it is which identity? It is distributive property. Okay, total 6 properties पढ़ी थी, उसमें से 5 तो यहीं यूज हो गई. Okay, now question number 2, state the property
यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चंस के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका नाम बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द प्रॉपर्टी which is used in following, which is used in following. Okay, first question, 37 multiplied by 137 is given. Which property is used? Identity property. 1 से मल्टीप्लाई हुआ है एंड 1 इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 0 मल्टीप्लाई बाय 958, 0 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 0 प्रॉपर्टी। C is 28 multiplied by 17 is equal to 17 multiplied by 28. फर्स्ट में 28 का 17 से, in second part 17 multiplied by 28, it means which property? Commutative property. Okay, in D part 2 multiplied by 19 multiplied by 5 is equal to 19 multiplied by 2 multiplied by 5. In this part sequence is changed and grouping is also changed. It means which property? Associative. Associative property. Okay, and E part is 1538 multiplied by 7, 1538 multiplied by 3 is equal to 1538 multiplied by 7 plus 3. Observe this part. This part is in form of distributive property. ये कौन सी फॉर्मेट में है? डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मेट में। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव property. Now, question number 3. There are 2 questions are left of this exercise. Question number 3. Find the following product by suitable rearrangement. You have to do rearrangement of numbers and do multiply. For example, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एंड रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू डू होम. सिंपली जो गिवन नंबर्स हैं उनको रीअरेंज करना है कि किसका मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज एंड मल्टीप्लाई. ओके, पार्ट ए इज व्हाट? 50 multiplied by 27 multiplied by 2. Look in this question carefully. 15 multiplied by 27 is little bit hard. अगर हम आपकी क्लास के लेवल की बात करें, 15 multiplied by 27 is hard, but 15 multiplied by 2 is very easy. 15 2s are 100. 100 multiplied by 27 is 27. That's how you have to arrange the numbers and find your answer. Okay, question number 4 is same as question number 5 जो हमने स्टार्टिंग में किया था. Use the distributive property. In question number 4 you have also used to distributive property. Okay children, 2B exercise is finished. Now you have to do practice at your home. If you do practice then you will know very much that how these questions are done. जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे उतने ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे. ओके, गुड डे.